सो है गाइस, आज का जो प्रोजेक्ट है वो बेस्ड है कहीं ना कहीं हमने अपना जावा के जितने भी हम कवर अप किए हैं सारा का कॉन्सेप्ट। सो उसके ऊपर एक सॉरी प्रोजेक्ट है। तो यार चलो देखते हैं ये कैसे होता है। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रिकी है प्रोग्राम। तो चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि प्रोग्राम कैसे काम करता है, और अभी मैं बना के भी दिखाऊंगा। 8:01 p.m. तो फाइल के नाम से तो आपको पता चल ही गया होगा, हम एक नंबर बेस्ड सिस्टम बनाने वाले हैं जहाँ पर आ, हमारा कंप्यूटर रैंडमली नंबर को जनरेट करेगा और आ, उसको स्टोर करके रखेगा। जब यूज़र उस नंबर को सही गेस करेगा तो तब उसको एक मैसेज मिलेगा। ऑल राइट, सो यार चलो शुरू करते हैं। तो A few moments later. पहले तो हमको यूज़र से इनपुट लेने के लिए import java.util.scan, right? Import java.util.scanner. After that we give a class that is number system, right? And I want to turn off the Wi-Fi. Shut up. ESVM public static void string args. क्या उसके पहले we make a function by make it static void name plugins, right? Use random r equals to new random. We create an object of random int generated number equals to r dot next print, right? Next int I set the values lies between 0 to 1 to 1000, sorry, not 1000, 100. After that I use exception handling, try scanner sc equals to new scanner system.in. all right, int user guess equals to 0, so for the clear buffer system.out.println welcome to number has been guess the number in between 1 to 100. Alright, I use while loop, user guess does not equal to generated number, int guess equals to sc thought negative. Alright, so user guess equals to I assign this guess, right?
I simply swap this guess is greater than generated number. Guess is too high. Try again. Alright? Otherwise, else if guess is less than generated number, guess is too low. Try again. Alright. Try again. And after that, we call the function play game. We use static keyword, so we do not need to initialize the object of the function play game. So we compile and see. This compiling and simply allow. Welcome to number guess game. Guess the number between 1 to 100. Suppose I guessed 56. The number is too low. Means my guess and the generated number is less than. So 65 still too low. 675 since too low. 85 too high. 76. Yeah, I guess the number. So you tell me in comment box, अगर आपको दिया होता तो आप कितने गेस में कंप्लीट कर पाते, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हम यहाँ पर थोड़ा सा कस्टमाइज कर सकते हैं, या एल्स congrats, you guess the number. Alright, I recompile again. 75 too low. 85 still too low. 95 too high. 87 86. Alright, so तो यार आज का था ये वीडियो। तो हमने यहाँ पर सीखा कि कैसे आप नंबर गेस गेम जावा में बना सकते हो, और इसका सोर्स कोड मैं अपने गिटहब के प्रोफाइल में दे दूँगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो जल्दी से जाओ, गिटहब चेक करो, और हमारे यार भाई हो यार, अपना कोडिंग को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और अपने जावा वाले ग्रुप में शेयर कर दो। जल्दी से हम अपना वेबसाइट लॉन्च करने वाले हैं, जहाँ की वेबसाइट में सारा प्रोजेक्ट हम डिलीवर करेंगे, और बहुत सारे कुछ मैं अपने आगे वीडियो में बताऊंगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब कर लो। टिल देन कीप ग्रोइंग एंड कीप कोडिंग।